Welcome to Pathfinders Trainings. I am Yogeshwar Vashishtha speaking to you live from Mumbai. I'm a full time trader. I do this for a living. I am also a coach, and I believe stock market needs to be understood in a context. Until the time we don't understand it in the context, it doesn't work for us. So that's what I'm going to talk about. Some of you are freshers, some have done something before, some have suffered losses. So I'm a professional options trader, guys. I trade options rigorously and I trade options strategies. So I'll start by showing you my trades today. I teach with live trading. So I teach with live trading. And मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोफेशन है ये इंडिया में अभी डेवलप हो रहा है, इसको डेवलप होने में अभी टाइम है और बहुत सारे लोग अभी इसमें आ रहे हैं, पपी स्टेप्स। मुझे याद है मैं आईआईटी रुड़की का पास आउट, आई एम पास आउट फ्रॉम आईआईटी रुड़की 1989 में। आई हैव डन माय एमटेक इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की। सो व्हेन I got admission in my IIT. My father is an IITian himself. So he said, son, you're going to a very prestigious institute. So try to stay away from bad habits like smoking, drinking, drugs, stock markets, all in the same line. So मैंने अपने फादर को पूछा, पापा ये स्टॉक मार्केट क्या होता है? मैं तो 16-17 साल का था। उन्होंने बोला कोई जुआ है, कोई गैम्बलिंग जैसा होता है, इससे दूर ही रहना। गुड पीपल डोंट गो देयर। Until the age of 38, I had nothing to do with the stock market. Till the age of 38, I had absolutely nothing to do with the stock market. And then how I came into the stock market, well, that's a different story. I'll talk about it later. How many of you have been taught or told that stock market is gambling, stay away from it? आप में से कितने लोगों को बचपन से बोला गया स्टॉक मार्केट रिस्की है, गैम्बलिंग है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट? से यस इफ यू हैव बीन टोल्ड दैट. That is a lot of you that is saying yes, yes, that has been told to you. So no matter what happens, and people will get scared on this one. People get scared. So, and I was exactly the same till I was 38 years of age. Some of you are young, some of you are old. Please share your age with me. What is your current age? Please share with me. This whatever you write to me is personal to me only. आप जो भी लिख रहे हो वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं देखता है. Second, you guys have passed the most important thing. It is Christmas Eve. Most people are on holidays and you are here listening to a training on stock market. So hats off to you. Fantastic, guys. Proud of you. Today, let's see what I was doing. I was trading option strategy. See, you will not find any Tata or any Bata here. What we have is pure options that I was trading. That two option strategies. Some are directional neutral, some are directional, but all are controlled trades. All are controlled trades. And I have a running profit of 46,000 rupees, and the profit that I have booked today is 44,015 rupees. And I am a trader. I do this for a living. Today I booked 44,000 rupees. Yesterday I booked a small loss, 4,500. And what is the capital I'm utilizing here? If you will see here, मेरा कैपिटल है कुछ 23 लाख रुपया. अभी कुछ 2-3 महीना पहले ये कैपिटल 15 लाख रुपया था. 15 लाख से बढ़ के ये लगभग 23 लाख हो गया. And here, if you see, this month so far, I have already booked a profit of 4,45,000. And if I go down to the summary here, this month is already 22%. ये 22% का महीना है.
पिछले महीने it was 11,34,000, 75% in a month, 5,38% in a month. This is the capacity of this market. But I'm trading here for 20 years. मैं 20 साल से ट्रेड कर रहा हूँ. आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि मैं कितनी मेहनत करने को तैयार. I'm sure all of you are graduates. आपको ग्रेजुएट बनने में कितने साल लगे? Yes, tell me, how many years did it take for you to become a graduate? I try to keep my sessions interactive. Vaibhav says 3 years. No, sir. It took 18 years. Vaibhav 18 साल लगे. Junior KG में गए, Senior KG में गए. Then did your, right? और ग्रेजुएट होने के बाद तो नौकरी की भी गारंटी नहीं है. Then you had to become a doctor or an engineer. And those who are earning 1 lakh rupees a month, tell me honestly, guys, honestly बताइए कितने साल लगे आपको वो लाख रुपया महीने की सैलरी अटेन करने के लिए? ऑनेस्टली बताइए मुझे. आप सबकी सैलरी यहाँ 25,000 से 4 लाख रुपया महीने के बीच में है. दैट्स ऑल एवरीबॉडीज सैलरीज. मोहम्मद सेज 40 years लगे. Exactly. So it is a profession. That is the first thing we will have to go for. And the way we are serious in all the professions, similarly, we have to be serious in this profession also of the stock market. And the moment you become serious here, then there is money into this profession. This is my trading room, guys. I'm a professional trader. This is my trading room. And we are all born with zero skills. हम सब जीरो स्किल के साथ में पैदा होते हैं. फिर स्किल्स गैदर करते हैं. बोलने की स्किल, लिखने की स्किल, चलने की स्किल, रीडिंग राइटिंग स्किल, स्विमिंग की स्किल, गाड़ी चलाने की स्किल, देन प्रोफेशनल स्किल्स लाइक becoming a doctor, becoming an engineer. In fact, the first 25 years of our life are spent only in gathering skills, and the remaining life we utilize those skills. पहले 25 साल हम स्किल गैदर करते हैं और उसके बाद हम उन स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं. कैन यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑफ माइन? से यस इफ यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट. यहां से बेस बनता है, यहां से फाउंडेशन बनेगी, यहां से बेस बनेगा, यहां से फाउंडेशन बनेगी हमारी. राइट? सो स्टॉक मार्केट इज एग्जैक्टली द सेम. इट्स अ प्रोफेशन provided you take the trouble of learning it. Unfortunately, because it is equated to gambling and hardly anybody learns here, so everybody is in a hurry to make money. The moment they make losses, they run away, and then they say stock market is gambling. That's exactly what happens. Now when we are coming to, guys, I'm a voracious reader. So this is my trading room, backside my library. मेरा कुछ 5,000 किताबों का पर्सनल कलेक्शन है. मेरा छोटा सा रोल है, सिर्फ पढ़ने के बाद ही किताब को अंदर रखता हूँ. दैट इज, एंड आई बिलीव हम जो भी हैं हमारे फादर मदर की वजह से हैं. सो दे शुड बी अराउंड यू. So this is my parents, my father and my mother. Mother is no more. Father is 84, healthy. This Lifebuoy soap of Hindustan Liver, my father is the inventor of the soap. This organic fuel that goes into aeroplanes now, he was part of the team that invented it in Indian Institute of Petroleum, Dehradun in early 1970s. And one thing he told me is that there is no shortcut. There is no shortcut except hard work. Stock market is exactly the same. Who loses money? Who doesn't develop the necessary skill. And who makes money? The person who takes the trouble of working on it.
I'll not be talking about mutual funds or real estate. I'll be talking only about stock markets. So let's hit directly there. Directly वहीं पे काम करते हैं. And since most people are never trained in stock market, so they think there is a shortcut to making money here, which is not there. So let's start with the topic. Now tell me, on Monday morning, do you have any control as to what price the market will open on? मंडे मॉर्निंग को मार्केट कौन से प्राइस पे खुलेगा, आपका उस पे कोई कंट्रोल है क्या? यस और नो? No is the answer I'm getting from everybody. Great. Now, since you don't have any control, somebody would be in control. Somebody would be in control. So, who controls the market? This market is created and controlled by FIIs and DIIs. FIIs are foreign institutional investors. DIIs are our mutual funds, insurance companies, banks, corporate, big brokers. They are the one who create this market. And they are the one who drive the market up and down. And till the time you don't understand what kind of market are they creating or वो market किधर जा रहा है, you will not be able to neither enter it nor exit. I've seen a lot of people entering, but they don't know the exit. आपको महाभारत में एक कैरेक्टर याद है जिसको एंटर करना तो आता था पर एग्जिट करना नहीं आता था और वो मारा गया, बहादुर योद्धा था. What was his name? Let's say who is the first one to tell me. Who was that character in Mahabharata who knew how to enter but he didn't know how to exit? Very good, Sahil Ahuja. Abhimanyu. Exactly. It was Abhimanyu. And the problem is if you do not take the trouble of learn it, you will all become Abhimanyu. And if you can't get out, then it will be a problem. Like, let's go here. I have trained almost 2.5 lakh people in the last 12 years in these introductories, and about 6,000 people in my main workshops. Every year, about 600, 700 students pass through Pathfinders trainings. And one thing that I have seen here is that you have to build the skill here. You have to build the skill here. Like, people ask me, sir, what stocks do you have in your portfolio? I can show you. You can note it down. ये मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है. मेरे पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक नहीं. I have 0 stocks in my portfolio. No Tata, no but. Now, let's go here on this. Let's say I go here on this one. Guys, this is my son Siddhant Vashishtha. He is studying in Purdue University, USA, top 10 in the world, doing a double major in data science and computer science. He's a very proficient coder and algo trader. Here it is on his birthday in front of the National Stock Exchange. But let's go here. This is my post. I'll share with you. आप देख लीजिएगा. This is my post here on 6th of October. This is my post on 6th of October. Good morning to all my investors. I have an investor club where we build portfolios together. 2-3 things. मेरे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे आप 2 दिन में अमीर हो जाओगे. ऐसा कोई मेथड होता ही नहीं. Second, I have no software to sell. Third, I don't handle anybody's money. I have a personal trading capital of 15 crore rupees of my own. I trade with that. I have a quotient capital of about 1 crore rupees with which I train my students on this. कि मेरा सीधा सा लॉजिक है, जिसको पैसा बनाना आता है वो आपसे पैसा क्यों मांगेगा, और जो आपसे पैसा मांग रहा है उसको पैसा बनाना आता ही नहीं. Can you agree with this simple logic of mine?
फुल टाइम ट्रेडर हूं, अपना ही पैसा ट्रेड करता हूं सर. दिस इज द लॉजिक, ये बेस लॉजिक. Good morning. As you know, I have booked full profit in my stocks and mutual funds and also stopping SI. Then this is on 21st of October. Please do not be in a hurry to buy stocks for your portfolio. Let some correction happen in the next 2 months. बराबर. अभी ये तो मेरी पोस्ट है, आप देख लीजिएगा उसमें. और यहां पे अब हम पिछले 2 महीने का मार्केट ले लेते हैं. ये हमारा पिछले 2 महीने का मार्केट है. पिछले 2 महीने से ये मार्केट सिर्फ पूरा अक्टूबर गिरा है, पूरा नवंबर और अभी दिसंबर में भी गिरना शुरू हुआ है. नाउ हाउ डिड आई फाइंड आउट हियर? अभी बहुत सारे लोग वो मिस्ट्री बनाएंगे, आई एम एन एक्सपर्ट, आई नो व्हेन टू एग्जिट. ऐसा नहीं. जब तक आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, इसको एज अ प्रोफेशन आप डेवलप कैसे करोगे? वुड यू लाइक टू अंडरस्टैंड लॉजिक, हाउ आई कुड एग्जिट हियर? इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. ओनली थिंग इज they don't want you to be independent, they want you to be dependent on them. फाइनेंस की फील्ड में एक म्यूचुअल फंड वाला, एक कोई ट्रेनर ट्रेडर, वो चाहेगा कि आप उनके भक्त बन जाओ. वो स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे क्या करना है. डू यू डू दैट इन योर जॉब? इन योर जॉब डू यू गेट सैलरी फॉर योर ओन स्किल और स्ट्रेंथ और फॉर समबडी एल्स स्किल एंड स्ट्रेंथ? यस गाइस, किस चीज की सैलरी मिलती? खुद की स्ट्रेंथ की, खुद की स्किल की, या दूसरे की? Own skills. So here also simple logic is you will be paid very handsomely here for your own skills. So take the trouble of finding your skills. जितनी मैं 2 घंटे में सिखा सकता हूं, मैं आपको सिखा दूंगा. अभी वॉरेन बफेट का नाम किस किसने सुना है? चलो पहले देखते हैं कि मैंने बेचा क्यों. Let's first find out why did I sell. Who is Warren Buffett? Warren Buffett कौन है? The most famous investor, right? And an absolutely wonderful human being. So now, Warren Buffett created an indicator called Warren Buffett indicator. What is Warren Buffett indicator? Warren Buffett indicator आपको बताएगा, this is the Warren Buffett indicator here, TCS. This is TCS. अभी मैं बहुत डिटेल में इस पे बात करूंगा. I have not talked about that yet totally. Now here, if we go here on this, so what Warren Buffett indicator says is, यदि आपको पता करना है कि एक कंट्री का मार्केट महंगा है या सस्ता है, तो you have to see the GDP of the country and the market capitalization of the stock market. And the थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आराम से सिखाऊंगा. और and the market capitalization of the stock market. So here, if I go, let's say this is TCS. अब ये market capitalization होता है क्या? Market like TCS has a market capitalization of 13,57,848 crores. But if I go to Ascot's, Ascot's has a market capitalization of 25,000 crores. And if I go to Chamanlal Sethia, it has a market capitalization of 498 crores. So market cap क्या है? The price of the stock multiplied by the, the earnings per share of the stock. The number of stocks, by the number of the stocks. So the stocks are basically divided into 3 categories. Large cap stocks, 500 are there. Mid cap, what are large cap stocks?
stocks whose market capitalization is greater than 20,000 करोड़। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आप को नीचे से ऊपर ले आए, and now they are very established companies: Tata, Bata, Reliance, all the SCL Tech, Infosys. Then there are mid-cap companies having market capitalization between 5,000 crores and 20,000 crores. These are the companies that are just growing. This Escort said. It is growing, growth. Mid cap से large cap बनता है. Then there are small cap companies which are about 4,500 whose market capitalization is less than 5,000 crores. These three companies are the ones that are driving the market. What is a small cap trying to become? Mid cap. What is a mid cap trying to become? Large cap. So, why is the price moving? ये price रोज move क्यों कर रहा है? This price is moving because the price is trying to find its balance. तो अभी यहां जाते हैं, अभी दो तीन तरीके से इसको देखते हैं. First of all, if I look at the Warren Buffett indicator, I'll just share the link with you also. This is the link. And it says, country India, according to the original Buffett indicator, the stock market is significantly overvalued. And 10-year maximum is 117. Expected future returns 8.1% only in this. और तो सिग्निफिकेंटली ओवरवैल्यू. मैं तीन तरीके से मार्केट को आपको सिखाऊंगा. Significantly overvalued. Now, what is the average value of the Warren Buffett in India? The average valuation of Warren Buffett indicator is 75. 75 Warren Buffett indicator की average value. अब इस सबको सिखाने के लिए लोग बहुत सारे पैसे ले लेते हैं. कॉमन सेंस है, हम पढ़े लिखे लोग हैं. अभी हम सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं. आज मार्केट का प्राइस है. लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये मार्केट यहां से किधर जाएगा? तो मैं बोलता हूं भाई ये तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पर मंडे को खुलेगा जरूर, आना जरूर. बट if you don't know the levels, how will you trade? My style of trading is price action trading. I mostly do price action trading. ये हमारा आज का मार्केट at about 17,000 rupees. Now, where is the target? Now, इस मार्केट का where is the target that we are looking at? So now, if we check out, just a minute. If we are working on this one here, where is the, so now the current value of the indicator, Warren Buffett indicator, is 113. What is the average value? 75. ये historical values है. So now let's use very simple mathematics to find out what is the target of this market. The target of the market is 75 divided by 113 is 0.66 into 17,000. So this market is having a target of about 11,300 rupees. So ये market का जो target है, just give me a minute, I'll just change my give me a minute, guys. I'll restart my tool that is missing. Just restart my computer. Give me a minute. I'll just restart my trade diagram. Just 1 minute. So now, if we see 75 divided by 130, that's what we saw. What is the current value?
Recent current value is 130. Now here, as मैं इंजीनियर हूं तो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग तो आ ही जाएगा. Now 75, I just said, divided by 113, again कर देते हैं, into 117,000. So the expected value of the future is about 12,000. Let me open the chart here. 12,000 on this. And let's mark a 12,000 on this. Now, where is 12,000? This is about 12,000. ये ध्यान में रखते हैं. ये पहला तरीका हमने देखा. This is the first piece. Everybody clear so far? Is it a rocket science? No. I'm trying to simplify. अभी दूसरे पे जाते हैं. There are 2-3 methods by which we will confirm. And I'll tell you why did I sell it? मैं क्या कारण था? And I booked a very huge amount of profit. Now, another way most people see if the market is cheap or expensive is by using the P ratio. P is price to equity ratio. And the price to equity ratio, this one also I'll share with you. The price to equity ratio of the market in November was 26. It has a high of 28. And the current value is about 23. Now, reference के बिना ये 23 का कोई meaning नहीं. How many of you have no idea what 23 means? Say no. कोई problem नहीं है. बोलो. Just say no if you don't know what is the significance of this 23. Very good. Excellent. हमारी जर्नी ही I don't know से शुरू होती है. In stock market, our journey should start with I don't know. Didn't our journey of life started with I don't know? That's why we went to school and colleges. यदि हमको बचपन में हमें तो सब आता है, so then we would have never gone to school. Stock market is the same. We have to first accept that we are not trained in the stock market. We don't know anything about it. And we have to start from absolute zero. You guys are lucky you're starting at a young age. I started at 38. 38 साल की उम्र में तो मुझे पता चला कि ये मार्केट है. नाउ दिस 20 इसका रेफरेंस बनाते हैं. लेट्स गो हियर. आई शेयर वन मोर लिंक विद यू. I'll share one more link with you here on this. Now this is the Nifty P ratio. If the Nifty is having a P, और ये standard values हैं, freely available हैं, 25 to 30 is a rare event and a screaming sell. Search for shorting opportunities. Expensive 20 to 25, book 80% profit and wait for better levels. 15 to 20 buy or hold. Inexpensive. What is the average value of Nifty of P in India? जैसे वॉरेन बफेट इंडिकेटर का एवरेज है 75. ऐसे ही निफ्टी के पी का एवरेज है लगभग 50. Now let's do another calculation. Now this is 15 divided by अभी कितना है 23. 0.6521 into 17,000. So according to this, the new target in the coming year of our market is 11,086. And this indicator has nothing to do with Warren Buffett indicator. ये अलग है, वो अलग है. But is it confirming the Warren Buffett indicator? Yes or no? Correct? अब और आगे बढ़ते हैं. Let's go further. Now let's use a common sense indicator. Now I'll use an indicator called common sense indicator. And let's use this. This is
our stock market of the last 21 years. ये हमारी 21 years की stock market. It goes up, it comes down, it remains sideways. Now, this was the first bull run. This was a bull run. This was the first bull run. Then this was here, the second bull run here. This was the second bull run. Then this was the third bull run that happened. Let's see. This was the third bull run that happened, right? And then came a very unnatural phenomena called COVID. And in COVID here, this was the market that was there. Now, let me draw. Now, tell me, is this angle of the last bull run more or less than earlier angles of last 20 years? Is it not only more, it is much more, much higher. If you see here, this is about 45, 50 degrees, 45, 50 degrees, 45, 50 degrees. We have almost a 70 degree. We have almost a 70 degree. Let me do a very simple thing. I draw a line parallel to this line, the long bull run, and then here on this, I bring this parallel line down around this level. This is a line which is parallel around this level. Okay. This is a parallel line that is happening, and a little here. Just a minute, I'm trying to make it exit. Correct? This is more or less a parallel line now. Yeah, that's parallel. And now, if I drop this down to around this level where it is touching, it comes to about 11,000 rupees. Now tell me, is this, which is a very common sense thing that anybody knowing geometry can do, confirming Warren Buffett and National Stock Exchange? Yes or no? Yes. So that was the reason I sold it here. So I have no business being in the stock market when I know कि अगला 1-1.5 साल करेक्शन का होने ही वाला है. Why should I buy stocks? Now, then people will ask, well, if you don't buy stock, then what will you do? Okay, this is everybody clear on this? Why this market is expected without a mystery that everybody creates around it? And now, if you don't sell it there, where will you sell? And when it comes down, won't this same stock be available to be like one stock that was part of my portfolio was Chaman Lal Shethia, rice exporters. It was in my portfolio. I've made a lot of money from Chaman Lal Shethia. Small cap stock. We sold it around this level of 138. Now, isn't this same stock available at 96? And I'll patiently wait for it to be available at 75. जब भी 75 में मिलेगा फिर खरीद लूंगा. I bought it at 3 rupees, sold it at about 120 rupees, bought it at 70 rupees, sold it at 800, bought it back, then sold it at about 1200. Then it had a 1:10 split, bought it at about 100, sold at 400, bought it at about 60, sold at 138. Now waiting for it to come back to 75. That's how trading is done. This is not buy and hold. You have to know when to enter, when to exit. Now
to book your profit or to book profit, do you have to enter or do you have to exit? Chalo, tell me. To book profit, do you have to enter or do you have to exit? चलो बताओ कौन बता exit. Excellent, बहुत बढ़िया. You have to exit. To book profit, you have to exit. So exit is everything. By entering, do you buy the risk? You buy. By entering, you buy risk. By exiting, you finish the risk either by being profitable or in. So this is a very simple way to look at it, and we confirm this. So why should I have any stock in my portfolio when I know I'll get it at a discount? Tell me one thing. You are in the month of September, and you know in October there will be a Diwali sale of 50%. Will you buy in September or October? कब खरीदोगे आप? Won't you buy in sale? Wait for the sale. Time to get out, wait for the sale. So now, this is a game. You have to learn how to play it. Now let's go back to this slide. ये वापस जाते हैं इस पे हम लोग. Now in this market, you have three friends. बैलेंस शीट, जहां से आपको पता लगेगा कि एक कंपनी की रियल वैल्यू क्या है. वॉरेन बफेट वर्क्स ऑन बैलेंस शीट्स. बैलेंस शीट deals with numbers and ratios. The moment I go here in this and I say Chaman Lal Shet here, see, this is so many ratios and balance sheets and everything. How will you buy this business till you know how to read them? You have to learn how to read them. So, fundamental analysis gives you the balance sheet. Not the backbone of your trading journey would be a technical chart. Would be a technical chart. Technical charts are created by FIIs and DIs. वो लोग ये चार्ट क्रिएट करते हैं. और यदि आपने चार्ट को पढ़ना सीख लिया तो आपने उनको पढ़ना सीख लिया. और यदि आपने उनको पढ़ना सीख लिया तो जब वो एंटर करेंगे आप भी एंटर करना, और जब वो एग्जिट करेंगे आप भी एग्जिट करना. And if you can learn to do that, haven't you become a profitable trader? Yes, you are. So, what it takes, technical chart is everything. Now, let's see a technical chart. But before I go there, guys, एक छोटा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. कुछ लोग, some of you have heard me before, some are new. So let me introduce myself in brief. My name is Yogeshwar Vashishtha, guys. I'm a civil engineer by profession. अपना M.Tech मैंने IIT रुड़की से किया था 1989 में, and this is my trading room. This is my M.Tech degree. I'm very proud of it. I'm M.Tech from IIT Roorkee. Then, after doing my IIT, I was in Skanska for many years. So, have you seen the movie Uri, guys? Uri movie देखी है आपने? I hope some of you have seen it. The place where it is depicted, there is a Uri hydropower project. I was the chief geologist of Uri hydropower project, from 1992 to 1996. From there, I went to Sri Lanka working on the Kukuleganga hydropower project. Then I was in Sweden. Then I was in Norway. Then my last project was in Peru, South America, Yunkan hydropower project. I was introduced to stock market in Sri Lanka, जहां मुझे मेंटर मिले जेफरी. उन्होंने मुझे सिखाया, मेरा इंटरेस्ट जगा. उसके बाद जब मैं पेरू में था, साउथ अमेरिका में, तो मैंने प्रिस्टीन एकेडमी में एडमिशन लिया. ये अमेरिका की एक कंपनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग
मैंने ली थी इनसे। 4 साल मैंने इनके अंडर में ट्रेन किया। 4 years आई ट्रेन अंडर हिम एंड आई गॉट अ कॉन्फिडेंस कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है जिसमें जाया जा सकता है। देन इन 2007 आई केम बैक टू इंडिया, बिकेम अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर। मेरी स्पेशलिटी है नीचे हुए मार्केट में भी पैसा है और ऊपर जाते हुए मार्केट में भी पैसा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट सून। माय बेस्ट ईयर वाज 2008। मार्केट ने क्रैश किया, मेरा प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा था। आई न्यू दिस प्रोफेशन इज फॉर रियल एंड आई वेंट इनटू इट। धीरे धीरे कब लोग आते गए, कब सीखना शुरू हो गया, तो इट डिडंट हैपन। उसके बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। दिस इज अ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स एंड आई बिकेम पार्ट ऑफ दिस टीम। आई वाज विद देम फॉर 2 years and there's some amazing international traders and they taught me so many things, but many of them were coaches. So I asked them, yeah, you guys make such good money, why do you coach? He says, so that we don't become rusty. You have to keep in touch, you have to coach people, help them out, and in the process you understand the market better. क्योंकि स्टॉक मार्केट 25% फंडामेंटल एनालिसिस है, 25% टेक्निकल एनालिसिस है, 25% रिस्क मैनेजमेंट है और 25% साइकोलॉजी। इसलिए चारों एरियाज में ट्रेन होना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत पसंद आया। तो 2 साल के बाद मैंने अपनी कंपनी लॉन्च करी, पाथफाइंडर्स ट्रेनिंग्स। ये जॉन बॉलिंजर है, इन्वेंटर ऑफ बॉलिंजर बैंड, एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, कोचिंग, और अभी तो बहुत सारे लोग कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, दे आर वर्किंग ऑन। सो दैट्स मी गाइस। एंड माई, आपको मैं एक वीडियो दिखा। अभी हम लोग क्या है, हम लोग ब्लेस्ड है, हमारे पास कंप्यूटर है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, हम लोग वाईफाई पे अपना काम कर रहे हैं। आई एम अ रोटेरियन। लेट मी शो यू अ वीडियो। लेट मी शो यू दिस वीडियो। दिस इज 200 वुमेन रिक्शा ड्राइवर्स। 200 वुमेन रिक्शा ड्राइवर्स। ये रिक्शा ड्राइवर क्यों बनी? देयर हस्बैंड्स आर अब्यूसिव एंड अल्कोहलिक। They didn't have any other choice but to try and find a profession. I'm part of the Rotary Club of Hiranandani Estate, District 3142, and we help them to get a rickshaw. और बहुत सालों से इनको रिक्शा में हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी 1 डेढ़ महीने पहले मैं इनसे बातें कर रहा था, तो अभी थोड़ा इनका फाइनेंशियली बेटर हुई, तो मैंने बोला भैया क्या कर रही हैं, आपको थोड़ा पैसा आ रहा है? तो बोलती हम अपने लड़कों को ये करा रहे हैं, अपने लड़कों को वो करा रहे हैं। 3-4 से बात करने के बाद I found they were only talking about boys. They were not talking about girls at all. So I asked one of them, और फिर लड़की का क्या करेंगे? वो लड़की का क्या है, वो तो शादी हो जाएगी और अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। They were not even bothered about their education. And then a gem of an idea came in my mind. I said, why not? I've got 2.5 lakh people. I'm taking it. Why not teach the young girls, the child of these rickshaw drivers, and give them financial education, make them traders, make them mutual fund advisors, insurance people. Maybe they will have a great job or their own trading, but let's give them a choice. So we have taken the commitment of creating 100 financially literate children from this strata. इनको भी हक है स्टॉक मार्केट सीखने का, इनके बच्चों को हक है स्टॉक मार्केट सीखने का, और उन लड़कियों को तो बिल्कुल हक है स्टॉक मार्केट सीखने का। हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी ऑन दिस गाइस? से यस। एंड नाउ आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू पे 59 rupees per month so that a girl child can be taught stock market? 59 rupees per month, that's all I am asking. And what do you get for it, as a thank you from it? As a thank you from me, you get to connect with me every morning, 8:30 to 9. 8:30 in the morning to 9 o'clock.
आई डू माई प्री मार्केट एनालिसिस, मैं अपनी प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ, और वो प्री मार्केट एनालिसिस में मैं मार्केट भी एनालाइज करता हूँ और एक दो ट्रेड्स भी देता हूँ जो उस दिन करनी जैसे, और मैं भी वही ट्रेड करता हूँ। एंड यू गेट दिस सेशन एवरी डे। सो 59 रुपीज पर मंथ में आप गर्ल चाइल्ड को भी सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन में, और रोज सुबह आपको मेरे से एक सेशन भी मिलता है, आपको मेरे से एक सेशन भी मिलता है। और यहां पे इफ यू गो हेयर ऑन दिस वन, ये इसका लिंक है, ये इसका लिंक है, ज्वाइन, इसको मेरी चैनल को ज्वाइन करो। 59 रुपीज पर मंथ में रोज सुबह 8:30 से 9 आपको मेरे से सीखने को मिलेगा, मार्केट एनालिसिस मिलेगी। कोर्स अलग है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पर पहले जो चीज मेरे दिल के करीब है मैं वो आपको बताता हूं। दिस इज द लिंक, एंड इफ यू want to connect with me every morning and also help a girl child become a trader or a mutual fund advisor or a relationship manager, a job she can get, no he, only she, then click on join and join now, abhi, अगले 5 मिनट में आप ज्वाइन कीजिए। और कहीं ना कहीं एक बच्ची जो आज बर्तन धो रही, अपने फादर से अब्यूज हो रही, अपनी गरीबी में पल रही है, उसके पास मोबाइल फोन तो क्या, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको हम लोग स्टॉक मार्केट के लिए ट्रेन करेंगे। मैंने 2.5 लाख आप जैसे लोगों को ट्रेन किया है ऐसी इंट्रोडक्टरीज में, मैं कम से कम 1 लाख उन तक तो पहुंचू। और आपका ये सारा पैसा चैरिटी में जाता है, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, एक भी पैसा ये मुझे नहीं जाएगा। दिस ऑल मनी goes directly to those girls' education. So once you have joined, say yes here or write join. I'll just come back in 2 minutes. In the meantime, you join here. I'll share the link again with you, and then we will go. हमारी भी बहुत सारी पढ़ाई बाकी। I'll be teaching you the 9 dimensions of the stock market. हर सुबह भी कुछ सिखाता हूँ, मेरी एक बड़ी लाइफ टाइम ट्रेनिंग भी होती है, उसके बारे में भी बताऊंगा, पर अभी हमारा बहुत सारा सीखना बाकी है। प्लीज नॉट ओनली जॉइन योर सेल्फ, मेक श्योर you forward it to at least about 10 people each. Put it in your group and other places, and I'll be very thankful to you. Let's go further now in this market. Now, let's go to this slide here. And I said, guys, I'm an options trader. Let's understand. Now, if the price is going up, you make money. But in a stock, if a price is going down, you lose money. What if you can make money whether the price goes up, goes down, or doesn't go anywhere? Wouldn't that be great? और अब अच्छा होगा ना, ग्रेट होगा ना, यदि आप तीनों डायरेक्शन में पैसा बना सके, ऊपर भी, नीचे भी और साइडवेज भी। यस और नो बताइए। यस, करेक्ट। अब ये वाला कंसेप्ट समझते हैं। lot of mystery has been put around this. Let's do this mystery. Okay. Now, if I go here in this one, let's understand the three products. Let's understand the three products. पहला प्रोडक्ट है स्टॉक, द मोस्ट कॉमनली नोन टाटा बाटा स्टॉक। स्टॉक का व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टॉक? इट इज unidirectional. Stock is unidirectional. Means can give profit in up direction only. I'll show this with an example. पहले मैं बेस बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। सेकेंड इज फ्यूचर।
Future is a derivative. Like, what is a derivative? Let's understand. How many of you, what is the material of your shirt? The shirt you are wearing, guys, uska material kya hai? What is the material of the shirt you are wearing? Let's understand derivatives. Right? Cotton. Many people have said cotton. Now, with cotton, what all can be made? What kind of clothes can be made with cotton? Pants can be made, shirts can be made, undergarments can be made, a lot of bed sheets can be made, curtains can be made. So, a curtain, a bed sheet, a pant, and a shirt is a derivative of cotton. Is a derivative of cotton. ये concept clear हुआ? Because they are derived from the cotton. So if the price of cotton will increase, what will happen to the price of shirt? Will the price of shirt increase, guys? If the price of cotton increases, will the price of shirt increase? Yes, exactly. The price of shirt will increase. And if the price of cotton will decrease, the price of the shirt will decrease. अभी यहां से आगे चलते हैं. Future, this is unique product. Can give profit in up and down direction. Can give in up and down direction. That is a second product called future. And the third product, the best of the product, my product, is called option. And option can give money in up, down, and sideways direction. Let's understand now this with an example. This is it. Guys, don't bother about taking notes. I will be sending you a recording of this session. As soon as the session is finished, after that, I'll be sending you a recording of the session to everybody. And you can forward it to whomsoever you want. But don't forget to send the link for that gun chat. 59 rupees a month. And in that, you get 20 live sessions from me every morning. And you will have a dedicated guy who will be helping you. So now let's see with an example. Today, let's check out the market. Let's take Grasim. The stock that lost the most money was Grasim today. Grasim was down. Let's pick up a future and let's also pick up an index. What is the index? Index is a vehicle that represents multiple stocks. For example, ये जो निफ्टी है ये इंडिया के टॉप 10 कंपनीज के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है. Now if I go here in this, first one is Grasim. This is Grasim. And second one, let me pick up Nifty, the index. Today, Grasim was down 2.93%. Nifty was down 0.4%. Now here, let's first pick up Grasim. Now, अभी मैं कहाँ गया? अभी मैं गया, I went into the Grasim near future. So this is the future of Grasim, which because it was reflecting the price of Grasim, also went down 3.1%. Also went down 3.1%. And
The third option I had was a Grasim, but a put option. And let's say if I was having a put option of 1640 of Grasim, when Grasim was down 3%, the put option was up 172%. In fact, ग्रासिम के पुट ऑप्शन में आपका एक दिन का रिटर्न होता है 172, प्रोवाइडेड यू नो हाउ ना। पर अभी एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड, ओ 172%, यही करूंगा। बट हियर इज द, instead of the call option of grassing, if you a put option of grassing, you had taken a 1640 call option of grassing, you would have lost 65% of your money. अभी होता क्या है, ये 172% तो बहुत लोग दिखाते हैं, पर ये 65% कोई नहीं दिखाता, राइट? इनफैक्ट आपने आजकल देखा होगा ट्विटर वगैरह पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आज लगे होते हैं बड़े बड़े, मैंने 50 लाख प्रॉफिट कमाया, 25 लाख प्रॉफिट कमाया, 20 लाख प्रॉफिट कमाया। मेरे पास कुछ हफ्ते भर पहले एक फोन आया, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने बोला सर हम आपको स्क्रीनशॉट सप्लाई कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर का। ऐसा होता है कि बोला हाँ सर, फिर 500 रुपए में कैसा भी स्क्रीनशॉट आपको बना के दे देंगे। सो इन पे मत जाइए, दिखाते बहुत है, सिखाता कोई नहीं, इसलिए खुद सीखो, मेंटर रखो, कोच रखो। तो यहाँ पे दिस इज 1640 एंड मेक श्योर यू नीड टू लर्न। अभी नाउ लेट्स गो टू द चैलेंज। आपका चैलेंज ये है, नाउ लेट्स से दिस इज ग्रास 5 day 5 minute चार्ट ऑफ ग्रासिम। ये ग्रासिम, ये यहां ग्रासिम है, बराबर, ये ग्रासिम है। अभी यहां पे इधर ये ग्रासिम का पहला कैंडल बना। आपको कैसा पता लगेगा कि आपको तो अपना पैसा अभी कमिट करना है, यू हैव टू कमिट योर मनी नाउ। हाउ डू यू नो एट दिस टाइम whether to buy the call option or the put option? But because by mistake, if you buy the call option, you would have lost 65% of your money in a single day. That means, is it the easiest of the product or the most difficult of the product? सोच के बताइए। जहां आपका पैसा एक दिन में डबल हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इज इट द लीस्ट रिस्की प्रोडक्ट और द मोस्ट रिस्की प्रोडक्ट? मोस्ट डिफिकल्ट। वेरी गुड, वेरी गुड व्यापार। तो उसको आपको जल्दी हड़बड़ी में सीखना चाहिए, या उसके लिए आपको बहुत मेहनत करके पेशेंटली सीखना चाहिए? क्योंकि जब भी सीख गए तो यू कैन मेक अबाउट 25% इन अ मंथ। Most people jump into options. How many of you have lost money in options? Please write yes if you have lost money in options. क्योंकि ऑप्शन को समझने के लिए आपको क्या क्या समझना, स्टॉक्स you can easily work with a, maybe a candlestick chart. In an option, you have to learn time decay, you have to learn volatility, you have to learn interrelationships between them. There are so many, and it moves faster. In a stock, if a stock moves 1%, आपका प्रॉफिट लॉस 1%। अब इसके बाद आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में 10 टाइम लेवरेज होती है, मतलब स्टॉक में 1 लाख रुपए का स्टॉक लेने के लिए आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो 1 रुपए के मूवमेंट में 1% का प्रॉफिट लॉस। और फ्यूचर में 1 लाख रुपए का ट्रेड लेने के लिए आपको 10,000 रुपया देना है। इसीलिए 1% पे प्रॉफिट पे या तो 10% का प्रॉफिट या 10% का लॉस, तो इट इज 10 टाइम्स फास्टर। ऑप्शन में 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट लेने के लिए आपको सिर्फ 500-600 रुपए ही देने होते हैं। इट्स द चीपेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। बट देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ मूवमेंट हियर? द स्पीड ऑफ मूवमेंट हियर इज 50-60 times. So stock
is a car driving on the road at 20-30 kilometers an hour. What is the future? Same car on the highway at 200 kilometers an hour. And what is an option? Option is an aeroplane flying at 1000 kilometers an hour. Now, would you like to fly a plane if you don't know anything about flying a plane? Of course, it'll be an accident. So इसीलिए ये स्टॉक मार्केट में जाने का भी प्रोसेस है. It's a process. The way you can't do graduation before 12th and 12th before 10th, similarly, there is a structured way of going into the stock market. And like in the start, abhi, people will become very fascinated. They say, wow, great. Yeah, this is one thing that we are looking at. Fantastic. But then, 46,000 rupees in a single day, great. But then, when we are coming into this arena, it took me years to master options. The screenshot of 44,000 looks very attractive, but the hard work behind it is equally important. I conduct only one kind of a course, which is a lifetime of a course. मेरा मानना है 2-4 दिनों में स्टॉक मार्केट नहीं सीखा जा सकता है. So I conduct a course which is a lifetime of a course where there are only milestones. The learning never stops. There are only milestones in that we are going for here. So coming back here, how do you proceed? Stock market में आप proceed कैसे करो? Would you like to know the step-by-step process, how you can become a trader and investor and earn at least 1 or 2 lakh rupees a month eventually? It is a great source of income if you know how to go for it. Now, let's pick up here any stock. Now, to master the stock market, you need to understand the 9 dimensions of the market. There are 9 dimensions of the market. Let's straight away go there. These are the 9 dimensions of the market. Stock market is a fantastic profession. Unfortunately, it is still to be taught as a profession. It is still to be taught as a profession. Now, when we are going here in this, just give me a minute here. Now, the first is price. Let's go to the first one, which is price. So now let's go to the first dimension, which is price. Let's go and pick up a stock like Reliance Industries. Well-known name है. Now, Reliance Industries का अभी मैं let's open the chart of Reliance Industries. This is Reliance Industries here. This is the chart of Reliance Industries. Now, इसमें बहुत सारे टेक्निकल टूल्स है. I add into this a technical tool giving me, if you see here, there are a lot of technical tools. All this ADX, ATR, average, Bollinger Band, candlestick, CMU, Donchonian channel, elder ray. आप सोच लिए एक एक को मास्टर करने में आपको यदि एक एक दिन भी लगा तो it will take months to go into. That's why I run a course called a lifetime of a course. Lifetime का course. Now let's go here in this, and I use in this a very simple tool called moving average. How many of you have ever used a moving average in your trading? कितने लोगों ने moving average use किया है अपनी trading में कभी? Anybody? Okay, some of you have. Okay, fine. Now this is, I'm adding a 200-day moving average. याद रखिए, ये जो थ्योरी है जो मैं बता रहा हूं ये फ्रीली किधर भी एप्लीकेबल है, पर इसका एप्लीकेशन इज व्हाट इज द की. नोइंग द कंसेप्ट डजंट मेक, is only the starting step.
You have to take it on the level of a skill. What is skill? Skill is transfer of knowledge from conscious mind to subconscious mind by practice, practice, and practice. So let's take a very simple 200-day moving average. 200-day moving average क्या है? ये ईयरली ट्रेंड बता, ये पर्टिकुलर स्टॉक का ईयरली ट्रेंड क्या है. तो ये यहाँ पे मैं 200-डे मूविंग एवरेज लगाया. अभी यहाँ दूसरा डिमेंशन, ये सब मैंने अपने 20 साल के ट्रेडिंग कैरियर में सीखा है, किताबों से नहीं है. इनफैक्ट आप जाएंगे तो मेरी किताब एक पब्लिश हुई है अमेजन पे. यू कैन गो टू अमेजन एंड आई हैव अ बुक पब्लिश्ड देयर. नाउ दिस फंडामेंटल टेक्निकल मिसमैच, अभी ये समझ लेते हैं. व्हाट इज फंडामेंटल टेक्निकल मिसमैच? जब बैलेंस शीट कुछ और बात करती है और टेक्निकल चार्ट कुछ और बात करती है. व्हाट वॉरेन बफेट सेज इज, in the short term the price can go anywhere, but in the long term the price will come and kiss the balance sheet. I repeat, in short term प्राइस किधर भी जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म में प्राइस बैलेंस शीट पे ही आएगा. इसलिए बैलेंस शीट के बिना चार्ट नहीं है और चार्ट के बिना बैलेंस शीट नहीं है, आपस में अधूरे हैं. तो नाउ लेट्स लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो लेट्स गो हियर टू रिलायंस इंडस्ट्रीज. मैं यहां रिलायंस इंडस्ट्रीज चल देता हूं. बहुत बड़ी कंपनी है, अंबानीज है, पर इसमें कई वो हैं, और पिछले साल इनको अपनी कंपनी थोड़ी बेचनी भी पड़ी क्योंकि डेट बहुत हाई था. दे वांटेड टू बिकम अ डेट फ्री कंपनी. और जैसे कंपनी बहुत बड़ी होती जाती है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है. जैसे हमारे जीवन में ग्रोथ है, हम छोटे होते हैं, फिर हम यंग होते हैं, फिर हमारी शादी होती है, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं. ऐसे कंपनियों का भी होता है. जो लार्ज कैप कंपनी है, जैसे हम रिलायंस में देख रहे हैं कि ये लगभग 20% पर ईयर, 18-17% पर ईयर पे ग्रो हो रही है, पर इसका P31 है. मतलब ये ऑलमोस्ट डबल भाव पे अभी मार्केट में अवेलेबल है. यदि मैं इसको बैलेंस शीट के हिसाब से देखने जाता हूं मैं रिलायंस को, तो रिलायंस, इफ यू गो टू रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन द बैलेंस शीट, दिस इज रिलायंस ऑन द बैलेंस शीट. आज ये 2372 पे इसका आधा हुआ, लगभग 1200-1300. रिलायंस में तभी खरीदना पसंद करूंगा जब वो मुझे 1200-1300 पे मिलेगी, तो बहुत अच्छा प्राइस है. ये रिलायंस था. अभी यहां देखिए प्राइस क्या करता है. प्राइस की आदत है कि वो लंबे में ईयरली ट्रेंड लाइन की तरफ आ जाएगा. यदि उससे ऊपर चला गया तो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो उसको बेच डालेगा. उससे बहुत दूर नीचे चला गया तो बड़ा इन्वेस्टर उसको खरीद डालेगा. और ये मार्केट वो बड़ा इन्वेस्टर ही मूव कर रहा है, आप और मैं मूव नहीं कर रहे. डज इट मेक सेंस सो फार? Guys, are you liking this session, guys? Out of 10 if you can give me marks, तो मुझे ध्यान में आएगा मैं आपको कितना अच्छी तरह से पढ़ा पा रहा हूँ, कहाँ कमी रह गई. प्लीज गिव मी मार्क्स आउट ऑफ 10. परफेक्ट, थैंक यू. 9 देने, 10 देने, 0 देने, जितना दीजिए आपको, एब्सोल्युटली फाइन. परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, मैं भी नहीं हूं. ओके, नाउ हियर इफ यू सी, तो ये पैटर्न है इसका. दिस इज द पैटर्न वी आर लुकिंग एट. और हमने एक चीज नोट करी कि रिलायंस बैलेंस शीट पे आधे प्राइस पे, बैलेंस शीट पे दुगने दाम पे अवेलेबल है. वुड यू लाइक टू बाय समथिंग विच इज अवेलेबल एट डबल द रेट अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यूएशन, इवन इफ द नेम इज रिलायंस, भले ही उसका नाम रिलायंस है. एंड दैट इज वेयर द गेम begins. Now here if you see around this level,
अभी इतना सारा मार्केट 1.5 साल में ऊपर क्यों गया? व्हाई डिड द मार्केट गो सो मच अप? नॉट मेनी पीपल नो. It was because of the insane printing of money. Insane amount of dollars were printed so that the economies will not collapse. So that economies will not collapse. And US has printed more amount of dollars in the last uh, 2 years than it did in the last 200 years. Last 200 साल में जितना प्रिंट हुआ उतना लास्ट 2 साल में प्रिंट हुआ, तो मनी की वैल्यू कम होगी. द मोर इज द मनी इन सर्कुलेशन, लेस इज द वैल्यू ऑफ मनी. सिंपल. डिमांड एंड सप्लाई. तो अभी तो कोरोना था तो सब वो सब पैसा स्टॉक मार्केट में घुसा दिया गया, सो दैट, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी. एवरीबody wanted stock market should go up, so people should feel economies are becoming right. And once COVID is finished, वो जो पैसा पंप हुआ था अंदर, will that money go further in or will it come out now? It will come out. And उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, let's go here. Let's go to money control. Yeah, here. Now, this is a good link you should check out. Now, here if you see, this tells about the international market, and this is the activity of FIIs. In the month of, this is something that you need to understand here. This is FIIs. From in May, they sold 6,000 crores of the Indian market. In July, they sold 23,000 crores. August, 2,000 crores. October, mein they have sold 25,000 crores. और November में 39, and अभी ये वाले में they have sold for 33,000 crores. So they are removing the money. Who controls the market? You and me or the FII and DIA? Control कौन करता है? FII. If they are selling, should you be buying or selling? Of course, you should be getting out. That's why I again repeat, how many stocks do I have in my portfolio? 0. But do I make money every day with futures and options? मेरी गाड़ी अभी 50-60 की स्पीड पे नहीं जा रही है. मैं हवा में उड़ रहा हूं 1000 किलोमीटर के लिए, पर मुझे वो हवाई जहाज उड़ाना आता है. I know how to fly that aeroplane. You have to learn how to fly that. Yeah. Now coming back here, this was it. So now let's mark the balance sheet level. 1200 rupiah. This was roughly the level of balance sheet. So this is a good place to buy Reliance, because at 1200 rupees, Reliance is available at a discount. So why buy something now when in future it will be available to you at a discount? ना कोई पूछेगा नहीं गया नीचे तो ऊपर चला गया तो. Tell me one thing. Have you ever lost money by not buying a stock? बराबर है. तो इसीलिए खरीदने से लॉस होने का चांस है, ना खरीदने से तो लॉस होने का चांस कभी है ही नहीं. And that is a great thought to have in your mind. Now here, see what it is doing? धीरे धीरे it is coming back to the, कहां पे आ गया? yearly trend line. yearly trend line पे आएगा, थोड़ा जंप करेगा. It has gone a little up. और इधर इन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी. And you see, going up, coming down, going up, coming down, and see here now, it is already coming and touching the yearly trend line. तो ये सिंपल से लॉजिक से, अभी आप बताइए, आपको
चार्ट देखने का आंख थोड़ा बदला क्या? Did your eye of looking at the price change a little? Yes or no? Just by this one single tool, and there are hundreds of tools like this that you can learn and you can go for. Hundreds of tools like this that are there. Now, let's pick up uh, what is the risk in this market. Let me show you the risk in this market. There was one darling lately called IRCTC. This is IRCTC. Now, this is IRCTC, and you see in IRCTC, in a single day, it crashed from 1200 down. This is the risk if you don't know. That's why when you're coming into the market, your best friend is risk management. The ability to know what is your risk taking capacity, ability to enter and exit into it. Like today, market had a correction, and I want to know what are the good stocks to work on, let's say, Monday morning. I don't have to ask anything if I have the filtering skills. If I have the filtering skills, then I can go into. I said, okay, guys, let me see what has become a little attractive to buy. Using a very popular tool, RSI. आपकी स्टैंडर्ड क्या बताएगी किताब? 30 पे आएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और 70 पे जाएगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं बोला ठीक है, थोड़ा गिरा है, शो मी वेयर RSI इज लेस देन 30 and I want to deal only in the blue chip companies for the moment, and I say save and scan, और मुझे ये मेरी लिस्ट मिल गई. दिस इज माय लिस्ट. कितना टाइम लगा 8000 स्टॉक्स में से ये स्टॉक ढूंढने में? 5 मिनट, बिकॉज आई न्यू व्हाट टू लुक फॉर. इन स्टॉक मार्केट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, मुझे क्या देखना है. सो देन इसके बाद कैंडल स्टिक्स है. बट बिफोर आई गो देयर, समबडी वाज आस्किंग, सर व्हाट इज द कोर्स दैट यू रन, हमें क्या सीखना है? ठीक है, वो पहले बता देता हूँ, फिर वापस इस पे आते हैं हम लोग. ये सेशन 11:15 बजे तक चलेगा. 11:15 I'll close. I'll have a question answer session in the end. So now, what is the curriculum? आपको सीखना क्या है? What do you need to know to become a good trader? First, आपको बैलेंस शीट रीड करना. You should be good with balance sheets. Chart reading with technical analysis. Technical fundamental analysis takes about 2 months. Chart reading about 3 months. Then stock filtering, as I just told you, ऐसे बहुत सारी conditions जो आपको सीखनी है ताकि आप अपने आप ट्रेड ले लो. Risk management methods. Risk management method में you have to ensure that your planned profit is at least 2 times your planned loss. You have to plan your loss. आपके हाथ में क्या है बताइए? आपके हाथ में प्रॉफिट है या लॉस है? आप किस चीज का कंट्रोल आपके हाथ में है? प्रॉफिट का या लॉस का? आपके हाथ में सिर्फ लॉस का कंट्रोल है. यू हैव नो कंट्रोल ओवर प्रॉफिट. आपने एक स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा, वो अगले दिन 120 रुपया हो गया. व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन इन दिस? आपका कंट्रीब्यूशन क्या था उसमें? ऑल और जीरो? The contribution was zero. Exactly. But if you took a stock at 100 rupees, for it to for you to be protected, आपने 95 rupees में stop loss लगा दिया. So you have planned your loss. So a good trader plans his losses before he plans his profits. और आपके कैपिटल पे कितना आपको रिस्क लेना है, that is also defined. You can never take more than 5% loss risk on your capital.
Most people don't even know very basics of risk management. Risk management is everything. हम शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में. Do you buy according to your desire or do you buy according to your pocket? मॉल में आप अपनी सपने के हिसाब से खरीदते हैं या अपनी पॉकेट के हिसाब से खरीदते हैं? पॉकेट के हिसाब से. यहाँ स्टॉक मार्केट में भी पॉकेट के हिसाब से काम करना है. आपका ब्रोकर तो चाहेगा आप अपना घर बेच के उसके पास चले जाओ, बट यू हैव टू बी द वन हु हैज टू बी absolutely careful. In it's your hard earned money, guys. It's your hard earned money. And another great thing about learning this is you will not have a pension. Create a pension through stock market by building a stock portfolio growing at 24% and increase your income. If you're earning a salary of 1 lakh rupees per month and you learn how to make an additional 25,000 rupees a month from the stock market, you're done. You have given yourself a 25% raise and you don't have to be near the market for more than 1 hour in a day. I'm a full-time trader. 8:30 I come near the market. Till 9 o'clock I'll take a session with you, all those who have paid. 9 o'clock I start my live trading with about 500, 600 of my traders. Close the session at 10 o'clock, put my auto trade into, and then I come near the market at 2:30. At 2:30. So it's the biggest myth that you need to look at the market continuously. You will lose the most money by looking at it continuously. So mastery of online platforms, like for example, तीसरा जो the third dimension is the candlestick pattern. Now, candlesticks were invented in Japan about 400 years ago. They were invented in Japan, and you can just with candlesticks you can find out what is going to happen to the market. Like, let's pick up the index here. Now here, this was a very classical one. This rally till this time, यहाँ तक FIIs were also participating, DIIs were also participating till about 15,900. After this, in my 20 years, I have got a technical human indicator, and the name of the technical human indicator is milkman, raddiwala, akhbarwala, and watchman. When these people start telling you stocks or they want to invest all their money in stocks, it means the market is peaking. Market peak. जब आपका अखबार वाला आपसे शेयर बाजार के बारे में राय पूछना शुरू करे तो आपको डरना चाहिए मार्केट में. This is when it started here. Now this was, what was this? This was a retail rally. एंड में आती है हमेशा. This was a retail rally. And this retail rally took the market here, and this is where the signs of fatigue started coming. This is a doji. What is doji? It's a candlestick pattern. The moment you understand a doji, the market will come to you and say doji. That's how powerful is doji. This was a giveaway. This is called the gaps that were forming, and this is called an exhaustion gap. EXHAUS. This is called an exhaustion gap. FII DII के पास अनलिमिटेड मनी है, पर रिटेल कॉमन पब्लिक के पास लिमिटेड मनी. वो एक लिमिट के बाद उसको ऊपर नहीं ले जा सकते हैं और सच सिर्फ आपको कैंडल में दिखेगा. This last candle was a spinning top. Next candle was a bearish engulf. So this was a classical pattern
whose success rate is 90%. This is where we sold everything. जो भी थोड़ा बहुत था वो भी निकाल दिया. Let's mark this rally. Let's mark this rally. Retail rally. FIIs भी बेच रहे थे, DII भी बेच रहे थे, कॉमन मैन खरीद रहा था. Common man was buying. Now here, now these are Fibonacci levels. These are the Fibonacci levels. This is the levels of the natural numbers, and extremely important in price action trading. Price came, पहले लेवल पे आया और ये दो गैप खत्म करे, दो गैप फिल करे. फिर यहां से एक रिट्रेसमेंट लिया, वापस आया, दूसरे लेवल पे गिरा, वहां फिर थोड़ा गया, नीचे तीसरे लेवल पे गिरा, फिर गोल्डन फिबोनाची लेवल से उसने एक रैली ऊपर ली और एक फ्लैग का पैटर्न बनाया, यहां से फिर एक रैली ऊपर ली, अब नीचे जा रहा है और धीरे धीरे इसको ब्रेक करके ये इसका टारगेट है 15,513, और जो मेरा ट्रेड चल रहा है 25 लाख रुपए पे, जब ये इस लेवल पे आएगा तो वो लगभग मुझे 7 से 8 लाख रुपए का प्रॉफिट देके जाएगा, एंड ऑन अ कैपिटल ऑफ 25 लाख रुपीस. और लगभग कब तक एक्सपेक्टेड है? मिड जनवरी टू एंड ऑफ जनवरी. So this is, you have to be proficient to read the market in any direction, up, down, or sideways. Then you are a trader, and you should work on, like here I have just filtered these. So these are buying opportunities on Monday, पर ऐसे नहीं खरीद लेना है. You should know how to read. Like इसमें I'm going here in this and I'm checking out, let's say, another very common indicator called MACD, moving average convergence divergence. Apply. And looking at this one, I can see कि अभी खरीदने जैसा नहीं है क्योंकि सिग्नल ही नहीं मिला. ये दूसरे में गया, ये तीसरे में गया, ये चौथे में गया, यहां पे भी नहीं है, यहां 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 और यहां मुझे मिला. तो मंडे को इवन दो फिल्टर में सारे आए, पर लेने जैसा सिर्फ वर्लपूल है, और उसमें भी मैं एक प्रॉपर एंट्री का वेट करूंगा. There is a whirlpool which is worth buying. Now, if I go to whirlpool, ये whirlpool है, ये कैंडल से नहीं दिख रहा, अब ये टेक्निकल इंडिकेटर से मैंने देखा, MACD से मैंने देखा. That's what I did here. And let's say, I'll say, let it create an uptrend. I will buy it when it comes here. My stop loss is just below it, and my target is the level from which it started falling down. तो यहां मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क है 4.6. अगर मैं गलत हुआ तो 108 रुपए का लॉस होगा, पर अगर मैं सही हुआ तो 500 रुपए का प्रॉफिट होगा. इफ आई एम रॉन्ग, आई लूज 100 रुपीज. इफ आई एम राइट, आई विल मेक 500 रुपीज. टेल मी गाइस, you take 10 trades like this, out of which in 5 you are right and in 5 you are wrong. Overall, will you make money or will you lose money? Yes, guys. Overall, will you make money or will you lose money? You will make money because your profits are bigger and losses are smaller. Very good, Virendra Rawat. Okay, and Mohammed and Web, very nice. So here, if you see here on this one, so
Then high probability trading strategy. It's all about strategies. When you come into my courses, you pay for strategies and live trading. This I teach you for free. This is a regular thing that you should be knowing because you came here and you know you committed your 2 hours to me. Trading plan aligned to your personality, rational decision making, money management and trade management, managing emotions and your subconscious mind. Now here is the slide. So here, price, fundamental technical mismatch, candlestick patterns. फिर volume and open interest. These are the key drivers. Open interest means there's something called option chain. And if you understand you should not even think about starting options before you learn how to read the option chain. Without learning how to read the option chain and the open interest into it, trading options is suicide. And I've seen a lot of people committing suicide every day in the stock market through options. Then volatility. There are two volatilities. We have a historical volatility, we have got an implied volatility. तो उसको कैसे मैनेज करोगे? Momentum of the price by various oscillators and indicators. Then, like for example, let's say I want to check out, Oro Pharma. I go here and I go to Oro Pharma and I use a ट्रेंड मेजरिंग टूल. मैं इसमें ट्रेंड मेजरिंग टूल यूज कर रहा हूं called ADX, Average Directional Index. Average Directional Index. So this is, and the Average Directional Index has said ट्रेंड ही नहीं, कोई खरीद ही नहीं रहा है और गिरेगा. थैंक यू वेरी मच जिसने भी दिया मुझे तो मेरा मंडे के लिए अच्छा सा ट्रेड मिल गया. और यदि मैं ऑरो फार्मा में जाता हूं, इफ आई गो इनटू ऑरो फार्मा, एड स्क्रिप्ट, ऑरो फार्मा, and here in Oro Pharma, add script, I go to the future of Oro Pharma. This is the future of Oro Pharma, which I see is at a very minor premium. And here I look at a 700 call option of, and now with the combination of these two, I can create a strategy. स्टॉप लॉस की कोई जरूरत ही नहीं है और इतनी स्ट्रांग स्ट्रेटजी है कि अगर आप गलत हुए तो छोटा सा लॉस होगा 3-4 हजार रुपए का, पर अगर सही रहा मैं और मेरे लेवल पे और फार्मा गया तो कम से कम 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट देगी. ये तो सिर्फ छोटा सा मैं एक दो खोल रहा हूँ. ऐसी तो इतनी सारी स्ट्रेटेजीज पे आप काम कर सकते हैं. दूसरे के भरोसे काम नहीं होता है, अपने भरोसे स्टॉक मार्केट किया जाता है. मेरी बहुत फेवरेट एक कविता है हरिवंश राय बच्चन की, उससे खत्म करता हूं जरा. उसका पूरा तो मुझे याद नहीं रहता है. नन्ही चींटी, नन्ही चींटी, this one, this is, this is हरिवंश राय बच्चन. Just a minute. Let's just check out the images here. This one, then I have full, this one. I think this is the one I'll use. Just a minute, guys. Wait a minute. Yeah, I got it. सो स्टॉक मार्केट के लिए ये बढ़िया सी कविता है, मेरी बहुत फेवरेट है. इसके साथ में खत्म करता हूं आज. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर
100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। स्टॉक मार्केट इज लाइक दिस, परसिस्ट, वर्क हार्ड, persist, and money will be yours, guys. And I pray that one day all of you have a trading room of your own, much better than mine. You know, okay. Mohammed say, as I'm located in Qatar, please let me know the timing of interview tomorrow around 11 o'clock in the morning Indian time. Mohammed, मोटा मोटा दिमाग में रखो, 11 o'clock Indian time is what. And my manager Nikhil will be giving you a call. So all those who have paid the 1,000 rupees advance, you will get a call after 10 o'clock in the morning. After the session is finished, I will send a confirmation of your 1,000 rupees advance by email from my personal email ID. You know, and I'll also be sending a recording of the session to everybody. And please go. आप मेरा कोर्स लें नहीं लें वो आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज एक छोटी बच्ची को जरूर पढ़ें. Okay, and I'll also share the number of the manager with you guys. So this is the link, and thank you very much for joining. Wishing everybody a Merry Christmas and a very Happy New Year. God bless you and have a good night. Let's understand, guys. I am a coach. I've taught more than 5,000 people. Earlier, the courses used to be physical, but then the number of people, like this is about 125 batches that passed out in Mumbai. पर हर आदमी तो मुंबई नहीं आ सकता है सीखने के लिए, तो 2015 में कोर्स पूरा ऑनलाइन हो गया. लाइफ टाइम की ट्रेनिंग है और इसमें माइलस्टोन्स होते हैं. I'll be talking to you about the milestones. These are various people जो पास आउट हुए हैं. आपको मैं कोचिंग के बारे में बताता हूँ, पर मेरी कोचिंग में आने के लिए आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ पाओगे. आज मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही लोग लेता हूँ. यदि आप इंटरव्यू में पास होते हो तभी आप क्लास में आ सकते हो. इंटरव्यू में फेल होते हो तो नहीं आ सकते. ये 1,500 वाला ये कोई भी आ सकता है, क्योंकि एक छोटी बच्ची पढ़ेगी इसमें. पर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनाता हूँ, पार्ट टाइम फुल टाइम, सब लोग पास आउट हुए हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता हूँ. ये मेरी ऑनलाइन स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग है जो लाइफ टाइम की है. उसमें माइलस्टोन्स होते हैं. इसकी कॉस्ट है 47,000 रुपीज ऑल इंक्लूसिव, और हर साल 2,000 रुपया इसकी फीस बढ़ जाती है, और जनवरी से इसकी फीस हो जाएगी 49,000. और हर साल मैं ईयर एंड में एक ऑफर देता हूं, प्राइस बढ़ाने से पहले आपको भी उसके बारे में बताऊंगा, पर आप मुझे आज ये पैसा नहीं दे सकते. Today you can give me only 1,000 rupees refundable money and give the interview tomorrow between 10 and 1. If you pass the interview, the balance money you have to pay, 1,000 will be adjusted in that. If you fail the interview, your money will be given back. मेरे इंटरव्यू से बात करने का आपको लगता है कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भी आप अपना पैसा वापस मांग सकते हैं. क्रेडिट कार्ड की ईएमआई अवेलेबल है. 12
क्रेडिट कार्ड की ईएमआई अवेलेबल हैं 0% इंटरेस्ट, ताकि आप आराम से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पे कर सके। ये कोर्स का स्ट्रक्चर है, लाइफ टाइम का कोर्स है, इज ओनली फॉर सीरियस पीपल। हाउ मेनी ऑफ यू आर सीरियस? से यस इफ यू आर सीरियस। आप लोगों ने एक गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट किया, आई एम सो हैप्पी। बट यदि प्रॉपर ट्रेडर बनना है, मेरे साथ ट्रेड करना है, आप ये पैसा किसके लिए दे रहे हैं? मेरे साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ने के लिए, मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करने के लिए, मेरे साथ पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए, कमोडिटी करने के लिए, इंट्राडे करने के लिए, इन सब के लिए आप मेरे साथ जुड़ते हैं। सो ये हाउ डज इट हैपन? पहले आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू पास करते हो, फिर कल शाम को 4 बजे मेरा कोर्स शुरू हो रहा है, टुमारो इवनिंग 4 o'clock, जो इस साल का आखिरी कोर्स है, बिफोर आई इंक्रीज द प्राइस। सो कल इस साल का आखिरी कोर्स है, जो कल शाम को 4 बजे शुरू होगा। इंट्रोडक्शन सेशन होगा, ओरिएंटेशन सेशन होगा, उसके बाद आपका 1 महीने का फाउंडेशन ट्रेनिंग, यू विल गो थ्रू 1 month ऑफ फाउंडेशन ट्रेनिंग in which you will be trained to read the balance sheets, to read the charts, do all the oscillators, indicators, risk management, candlestick patterns, price action, rank codes and other charts. उसमें आप रेडी हो जाते हो। तो अभी 1 महीने का माइलस्टोन क्या है? यू बिकम रेडी टू डू ट्रेनिंग, लाइव ट्रेडिंग विद लाइव ट्रेडिंग में इफ आई टेक यू टुमारो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट। And I normally trade with about 25 lakh rupees of my own money. In the start, आप कितने भी कम से शुरू करो, 2,000, 5,000, 10,000, डजंट मैटर, क्योंकि आप स्किल डेवलपमेंट के स्टेज में हो, टाइम लगेगा। Then live trading practice starts, which is 2 times in a month. फर्स्ट एंड थर्ड वेडनेसडे फुल डे, पूरे दिन, सुबह से लेके 3:30 तक होती है। रिकॉर्डिंग सबके अवेलेबल होती है इन केस यू मिस इट। एंड हियर you will be live trading with me 2 times in a month for a whole year, एक साल। अभी माइलस्टोन क्या है जो आप अचीव करोगे? Within 3 months you should start trading and investing proficiently। 3 महीने के अंदर आपको ट्रेडिंग भी आ जानी चाहिए, इन्वेस्टिंग भी आ जानी चाहिए, और आप अपना पूरा कैपिटल के साथ ट्रेड करना शुरू कर देना चाहिए। दैट इज द माइलस्टोन इन द फर्स्ट 3 months। Then by the time you are in the 6th month, you should be making 5% a month, 5% a month by trading futures and options। 3 महीने के बाद आप ऑप्शन शुरू कर देते हो। एंड देन व्हेन योर 1 year इज फिनिश्ड, ये 1 साल आपका खत्म हो जाता है, यू शुड बी मेकिंग अबाउट 10% अ मंथ ऑन योर कैपिटल। हमारी साइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां जो भी स्टूडेंट्स हैं, here this is Pathfinders, and I go to the best trades here. These are the best trades of Pathfinders। ये उनके ट्रेड्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लाइफ टाइम का कोर्स है तो आप हमेशा ही जुड़े रहोगे, कभी कोर्स खत्म ही नहीं होता, सिर्फ इसमें माइलस्टोन्स होते हैं। दिस इज टुडे द बेस्ट ट्रेडर मेड 84,000 rupees इन अ डे। आप देखिए, व्हाट इज ही डूइंग? ओनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। This is a profit of 39,000. What is it doing? Futures. Profit of 58,000 in a day, 79. And yet, you see here, this is a big trader with a capital of almost 25 lakh. This is his profit of 9,97,000 rupees in a day. But he's with me for a long, long time. तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहोगे। So हमेशा कैसे जुड़ोगे? How will you work on that? Let's understand. So just give me a minute। यहाँ पे ये हमारी स्लाइड है। तो this continues for 1 year,
और 1 साल के बाद भी आपको लगा कि अभी आप रेडी नहीं है, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देन एवरी थर्सडे रात को एक टॉपिक डिस्कस होता है 9 to 11। आई नो यू डू अ जॉब, तो ये कोर्स पूरा जॉब के हिसाब से डिजाइंड है। देन सेकेंड एंड फोर्थ थर्सडे इन द नाइट देयर इज अ लर्निंग सेशन ऑफ अ टॉपिक, क्वेश्चन आंसर्स है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। नाउ सपोर्ट कहां से आएगा, मेंटरशिप कैसे होगी? कल आपका सेशन होने के बाद जितने भी पार्टिसिपेंट, नॉर्मली एक बैच में लगभग 15 के आसपास पार्टिसिपेंट होते हैं, तो छोटा बैच रखता हूं ताकि इंटरेक्शन रहे आप लोगों का। और पहले मैं आप सबसे बात करूंगा, आई टॉक टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट इंडिविजुअली, 1 to 1। 4 बजे एक जूम मीटिंग लूंगा ताकि मैं सबकी शक्ल देख सकूं, सब मेरी शक्ल देख सके। एंड देन आई विल गो एंड डू अ पर्सनल कॉल एंड देन गिव यू pointers how you will go for psychometric testing होगी, and then you listen to the orientation session and then your course launch। सपोर्ट सिस्टम में मैं हूं, मंडे टू फ्राइडे 4 to 6 के बीच में मेरे सब स्टूडेंट्स मुझे फोन करते हैं और मार्केट टाइमिंग्स में आपका एजुकेशन मैनेजर आपके लिए अवेलेबल है। देन एवरी थर्सडे एवरी थर्सडे 12 to 1 लाइव ट्रेडिंग और मेंटरिंग होती है। 4 सेशन होते हैं महीने में, 48 session in a year, 480 session in 10 years. This never finishes. This keeps you connected with me forever. And there are milestones. Normally 6 महीने के बाद आपको मेरी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ ये की है, आप जस्ट गिव मी, दिस इज द की है गाइस। स्टॉक मार्केट मेरा पैशन भी है, मेरा प्रोफेशन भी है और मेरा सोशल वर्क भी है। आपके पास देने की कैपेसिटी है तो आपसे थोड़ा लूंगा, और जिनके पास कैपेसिटी नहीं है उनको दे दूंगा। That's how I work on a personal level. Before I come here, guys, that's my YouTube. Sorry, now this is my Facebook here. Now, दो बेटे हैं। ये मेरा छोटा बेटा है जो पर्डे यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एंड द दिस इज माय वाइफ। वी आर मैरिड फॉर 27 years। मैं थाने में रहता हूँ। दैट्स बोथ ऑफ अस। मैं ओरिजिनली देहरादून से हूँ, मेरी वाइफ गुजराती है। सो वी हैव अ लव मैरिज एंड दीज आर अवर 2 boys। दिस इज सिद्धांत, दिस इज वेदांत। वेदांत जस्ट फिनिश्ड हिज स्टडीज फ्रॉम शिकागो, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ही हैज डन हिज बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी वापस आया है बैचलर्स करके। अभी 2 साल ट्रेडिंग करेगा। ही इज अ कमिटेड ट्रेडर, and after that he will go ahead and he'll learn how to become a coach. This is how it goes. And I love to travel. This is Shamak Dawar. You guys know Shamak Dawar, and you can go here and look at the rest, guys. So that's me, more on a personal level. और मैं पसंद करता हूँ आपसे बातें करना। That's what I like, and these are द स्ट्रैटेजीज। ये टेस्टेड स्ट्रैटेजी, मैं 20 साल में स्ट्रैटेजीज बनाई है, इनका हिट रेट बहुत हाई है। तो ये आपको 3 महीने में आप इनके लिए रेडी हो जाएंगे। आप 3 महीने में रेडी हो जाते हो ट्रेडिंग करने के लिए, पर 3 महीना लगता है। नाउ ये ऑफर है, हर साल के एंड में मैं एक ऑफर देता हूं प्राइस बढ़ाने से पहले। हर साल प्राइस बढ़ता है। आज व्हेन यू विल पे 1,000 rupees रिफंडेबल एडवांस फॉर द कोर्स इंटरव्यू टुडे, you get a 20% discount. You will pay 37,600 instead of 47,000. You save rupees 9,500. दूसरा, हमारा सब बैंक्स के साथ में क्रेडिट कार्ड्स का टाई अप है, ऑलमोस्ट सब के साथ। एंड विदाउट एनी पेपर वर्क, you will get on my website itself,
वी विल सेंड अ लिंक, 12 months क्रेडिट कार्ड ईएमआई। दैट मीन्स ये 37,600 भी एक बार में पे नहीं करना है, आप आराम से पूरे साल में उसको पे कीजिए, एंड नो इंटरेस्ट, वी विल बियर द इंटरेस्ट। जनवरी से फीस बढ़ के 47 से 49 होती है, उसके बाद आपको ऑफर के लिए एक साल इंतजार करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग कल शुरू होने वाली है। नाउ पे कैसे करोगे? पे करने के, ये 1,000 रुपीज का एडवांस पे करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जीपे पे से कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट ये है pathfinderstrainings.com। So here this is the paid courses that we see here। 49,000 फीस बढ़ रही है जनवरी से। यू कैन टेक दिस। ये 1,000 रुपए का एडवांस पेमेंट है जो आप यहां कर सकते हैं, हियर इन दिस। इसके लिए आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो कर लीजिएगा। दूसरा इजी तरीका जो है, जो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, वो है कि मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे आप 1,000 रुपीज का रिफंडेबल एडवांस दे सकते हैं। अब ये 1,000 रुपीज किस लिए? ताकि सीरियस आदमी आए, क्योंकि इंटरव्यू में जाता है आधा घंटा लगभग, तो सो दैट सीरियस पीपल कम। आपको पसंद नहीं आया, आपको लगा आप इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, हमें लगा आप नहीं कर पाएंगे, आपका 1,000 रुपये आपको इंटरव्यू के 1 घंटे के अंदर वापस मिलेगा। और यदि आपने पास कर लिया तो कोर्स फीस में एडजस्ट हो जाएगा। गूगल पे से पे कर सकते हो, पेटीएम से पे कर सकते हो, फोन पे से कर सकते हो। ये मेरा, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। जब आप पे करेंगे तो आपको मेरा नाम वहां पे दिखेगा, योगेश्वर वशिष्ठ। दिस इज द वे यू कैन पे। तो जिसको भी मेरे कोर्स में आ रहे हैं, कल शाम को शुरू हो रहा है लास्ट कोर्स ये साल का। अगले साल से फीस बढ़ जाएगी, 49,000 हो जाएगी। ये हर साल के एंड में ऑफर आता है, तो ये आपके लिए है। तो आप 1,000 रुपीज का एडवांस भर सकते हैं, और जैसे एडवांस भर दें तो मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको कंफर्म कर दूंगा। तो सीट्स बची हैं कल के लिए, तो यू आर वेलकम टू कम देयर। जैसे आपका पेमेंट हो तो मुझे बता दीजिए, इफ यू पे बाय पेटीएम और जीपे और फोन पे, लेट मी नो सो दैट आई कैन कंफर्म योर seat for the interview tomorrow. Okay guys, I'll have a question answer session now before I go further. So I'll have a question answer session now. Any queries, any questions you have, you can ask me now. आप इंटरव्यू के लिए एडवांस भरे या ना भरे, पर प्लीज ये 59 रुपीज आप जरूर देना, क्योंकि उतना तो बनता है किसी छोटी बच्ची को पढ़ाने के लिए। और आई एम श्योर आप सब लोग 59